Hello students, today we are continuing ecosystem lecture 2. In first class ecosystem we have discussed productivity, the functional components of the ecosystem. There are 4 functional components of the ecosystem. One is productivity, very important. Functional components of the ecosystem. फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में सबसे पहले आएगा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड आएगा डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी में क्या है, फिर 2 टाइप हैं। प्रोडक्टिविटी इज अगेन 2 टाइप्स, वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में 2 टाइप आ रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन प्लांट्स। फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्लांट्स के अंदर होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट मैटर इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो एनिमल में मैटर होता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। द टोटल बायोमास प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, क्लियर है। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स में होगी। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगेन 2 टाइप, जीपीपी, एनपीपी, जीपीपी एंड एनपीपी। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सबके डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। रेडी? तो सबसे पहला डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? टेक डाउन द डेफिनेशन। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, rate of biomass production is called productivity. Rate of biomass production. What is the rate of biomass production? It is called productivity. अब productivity में फिर 2 टाइप, primary productivity and secondary productivity. So what is primary productivity? Next, primary productivity is the formation of biomass in plants. Formation of biomass in plants by photosynthesis per unit area. Per unit area is called primary productivity. ओके, बहुत ही जो है क्लोज टर्म्स हैं ये, इसलिए मैं इसको आपको क्लियरली डिक्टेट कर रहा हूं। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। फिर उसमें फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया। इन ए गिवन एरिया टोटल amount of biomass synthesized in plant by photosynthesis is called primary productivity. Okay, again primary productivity are of 2 types. One is gross primary productivity. What is GPP? Gross primary productivity. Let us write the definition of gross primary productivity. Gross primary productivity का definition क्या है? It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. What is gross primary productivity? Rate of formation of biomass, rate of formation of biomass in plants by photosynthesis. By photosynthesis. ये हो जाएगा व्हाट
Gross primary productivity. As I told, primary productivity are of two types, GPP and NPP. So GPP is also plant, NPP is also plant. Then what is the difference? GPP is the rate of formation of biomass in plants by photosynthesis. Then what is NPP? NPP is net primary productivity. Full form तो आप already लिखे होंगे last class में ही. अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए. What is GPP? Gross primary productivity. GPP is gross primary productivity. NPP is net primary productivity. Net primary productivity. क्या है ये net primary productivity? Net primary productivity is equal to GPP minus R. R means respiratory loss. R means respiratory loss. So whatever the total food synthesized in the plant body, that is called gross primary productivity. And after synthesizing the total food, plants are utilizing some amount of food. The amount of food utilized by the plant, that is equal to minus R. इसलिए माइनस क्यों कर रहे हैं हम? Plants are using some amount of food. For example, if mother is preparing food and then mother is distributing food among children, and after distributing the food among children, the mother is also using some amount of food. Mother भी कुछ food use करेंगे और बाद में बच्चों को distribute कर देंगे. So ये जो R है, mother is using that R. Plants are called mother of nature. So they are preparing food for every children, and after preparing food, the mother is distributing food to everyone, herbivore, carnivore, humans, everyone taking food, and mother is also using some amount of food, that is R. जो total food बना GPP, उसमें से minus R कर दीजिए, respiratory loss. And who is doing this respiratory loss? Respiratory loss by plants. Respiratory loss by plants is minus R. ठीक है. And one more definition for NPP, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, just NPP is equal to GPP minus R लिख दीजिए. And one more way of writing the same definition, NPP, the amount of biomass left in plants. What is NPP? The amount of biomass left in plants for consumers. What is NPP definition? We will write here. The amount of biomass left in plants. The amount of biomass left in plant for the consumption of herbivores. For the consumption of herbivores is called NPP. Is called NPP. अगर मैं आपको पूछूं GPP is larger और NPP is larger, तो डेफिनेटली हर कोई बोलेगा GPP is larger. GPP में से माइनस R करेंगे तब NPP आएगा. That means GPP is far greater than NPP. ओके, तो ये सारे डेफिनेशन आ चुके हैं. देखिए एग्जाम में पूछ सकते हैं ये डेफिनेशंस. व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय द कंज्यूमर्स. The total biomass synthesized in consumers by feeding upon plants is called secondary productivity. A rabbit is feeding continuously on grass, upon radish, upon carrot. एक रैबिट क्या है? प्लांट्स खाकर जो है अपना बॉडी में बायोमास तैयार करता है, जो बायोमास कंज्यूमर में तैयार होता है. The biomass synthesized in the body of consumers is called secondary productivity.
एवरीबॉडी क्लियर व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? लिखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास भी बोल सकते हैं या ऑर्गेनिक मैटर भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर in the body of consumers. Who are the consumers? Consumers कौन है? Animals हैं. Consumers are the animals. Consumers are the animals. Rate of formation of biomass or organic matter in the body of consumers is called secondary productivity. Clear है? What is primary productivity? What is secondary productivity? Clear हो गया है ना ये? Okay. Primary productivity speaks about formation of biomass in plants. Secondary productivity speaks about formation of biomass in animal body और consumers body. फिर primary productivity में दो टाइप, GPP, NPP, and definitely secondary productivity में कोई टाइप नहीं है, ठीक है? And remember the unit. क्या है यूनिट? प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या था? एनर्जी में किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. दिस इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. और मास के टर्म्स में अगर बोलेंगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम per meter square per year. So these are the units of productivity. ये दोनों भी यूनिट चलेंगे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस होल बायोस्फीयर? टोटल अर्थ के ऊपर कितना फूड बन रहा है पर ईयर? टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर कितना है? टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस होल बायोस्फीयर, is 170 billion tons. 170 बिलियन टन्स, ठीक है? 170 बिलियन टन्स इतना जो है फूड बनता है, इतना फूड बनता है पर एनम. ये पर ईयर का है भाई. पर एनम दिस मच ऑफ फूड इज प्रोड्यूस्ड and everyone is taking food from this 170 billion tons. आपका भी फूड आप जो भी डेली ले रहे हैं ये भी 170 बिलियन टन से ही आ रहा है. एलिफेंट इज आल्सो टेकिंग फूड फ्रॉम दिस 170 बिलियन टन्स. whales, every animal, everyone is taking food from this 170 billion tons food synthesized per annum. Out of this from oceans 55 billion tons food is synthesized. 55 billion tons food is synthesized. 170 बिलियन टन्स में से 55 बिलियन टन ओशन से आ रहा है, तो रिमेनिंग जो बच गया वो 170 बिलियन टन्स में वो टेरेस्ट्रियल एरिया से आ रहा है. सो दैट मीन्स 170 बिलियन टन्स डिवाइडेड इनटू अगेन टू टाइप्स, प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ओशन, प्रोडक्टिविटी फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एरिया. प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ओशन अगर आप देख रहे हैं, ओशन से 55 बिलियन टन्स है. क्वेश्चन पूछा गया है बुक में, व्हाई देयर इज लेस प्रोडक्टिविटी इन ओशन इवन दो दे आर कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ. Oceans are having less productivity even though they are
covering, they are covering major part of the earth, major part of the earth, that is 70% of the earth is covered by ocean. आपको पता होगा 70% of the earth is covered by ocean, then also less production. Why? This is because light is limiting factor. Lighting is limiting factor in ocean. ओशन में लाइट लिमिटिंग फैक्टर है. होप यू नो लाइट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल द डेप्थ्स ऑफ ओशन, है ना. एक ओशन अगर सपोज 1000 फीट है तो लाइट क्या पूरा 1000 फीट तक नीचे तक जाएगी? नहीं जाएगी. लाइट इज अवेलेबल इन अपर पार्ट ऑफ द ओशन वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर, प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑकर. बॉटम ऑफ द ओशन में तो कोई फूड प्रोडक्शन है ही नहीं बिकॉज लाइट इज एब्सेंट. लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो गया है, वहां पे लाइट है ही नहीं. लिमिटिंग फैक्टर मींस मिनिमम अवेलेबल फैक्टर. तो बताइए आपको सारी चीजें कवर हो चुकी हैं. प्रोडक्टिविटी क्लियर हो गया है ना. जरा सा हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे. प्रोडक्टिविटी में हम क्या क्या पढ़े? What are the things we studied in productivity? Let us see. Productivity, first of all, what is the definition of productivity? Rate of formation of biomass. Rate of formation of biomass is called productivity. अब ये प्रोडक्टिविटी मैं बताया आपको दो टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी. Primary productivity is in plants, secondary productivity is animal. Primary productivity again two type, gross primary productivity, net primary productivity. And here GPP is far greater than NPP. GPP is greater than NPP. And productivity की जो यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, या किलो कैलोरीज फूड पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहां पर है? एनिमल्स में है. एंड विच वन इज लार्जर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? डेफिनेटली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी मोर. प्लांट्स में प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मोर देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. एंड टोटल 170 बिलियन टन्स. फूड कितना बना? 170 बिलियन टन्स. 55 बिलियन टन्स ओशन से है, फ्रॉम ओशन. अब ये बोलिए क्या 170 बिलियन टन और 55 बिलियन टन सेपरेट हैं या 55 इज इंक्लूडेड इन 170? तो यहां पे 170 बिलियन टन्स में से आउट ऑफ विच 55 बिलियन टन्स फ्रॉम ओशन. आउट ऑफ टोटल 170 बिलियन टन्स, आउट ऑफ विच 55 बिलियन टन्स फ्रॉम ओशन. क्लियर है? सारे चीजें क्लियर हो गए हैं ना. प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ वी कैन गो टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम रन करने के लिए, जैसे एक कंपनी है, सपोज एक कंपनी रन करने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग चाहिए, है ना. सेम ऐसे ही एक इकोसिस्टम रन करने के लिए, एक गार्डन रन करने के लिए, एक ओशन रन करने के लिए, एक डेजर्ट रन करने के लिए वहां पर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सबसे पहले वहां पे प्रोडक्टिविटी चाहिए. प्रोडक्टिविटी चाहिए. आफ्टर प्रोडक्टिविटी द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट functional component of the ecosystem is decomposition. Decomposition क्या क्या है इसमें पॉइंट्स देखिए जरा. सबसे पहला पॉइंट डिकम्पोजिशन में याद रखेंगे, डिकम्पोजिशन इज एरोबिक. इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. aerobic breakdown of organic matter. Aerobic breakdown of organic matter of dead remains.
What is decomposition? Decomposition is aerobic. Aerobic means it occur in presence of oxygen. एरोबिक ब्रेकडाउन है ये किसका? ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन हो रहा है. एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ plants and animals into simple inorganic nutrients, this is decomposition. Okay, every dead remain of plant and animal, चाहे plant हो या dead body या animal हो, every dead body is having some amount of organic matter. हर डेड बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर होता है. तो वो ऑर्गेनिक मैटर कहीं में कन्वर्ट होगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होगा. एरोबिक, बाय एरोबिक प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक होगा. ओके, एंड डिकम्पोजिशन इज माइक्रोबियल प्रोसेस. इट इज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई. इट इज ए माइक्रोबियल प्रोसेस. Microbial process carried out by bacteria and fungi. Bacteria and fungi करने वाले हैं ये decomposition. Who is doing this decomposition? Decomposition is conducted by bacteria and fungi. Bacteria और fungi करने वाले हैं decomposition. और एक बात यहां पे डिकम्पोजिशन से रिलेटेड याद रखना है. डिकम्पोजिशन में जो डेड रिमेन है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड डिट्रीटस. व्हाट इज डिट्रीटस? डेड रिमेन्स कॉमा डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स even fecal matter also. Fecal matter is also come under detritus. तो सबसे पहले detritus का मीनिंग याद रख लीजिए सब लोग. What is detritus? Detritus क्या है? कौन सा भी एक डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो, एंड इवन फीकल मैटर, एनिमल वेस्ट मैटर हो, दिस इज ऑल कमिंग अंडर डिट्रीटस. समझ गए ना सब लोग? जैसे ही डेथ होगी कोई ऑर्गेनिज्म की तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डिकम्पोजिशन. इन डिकम्पोजिशन देयर आर 5 स्टेप्स which occur simultaneously. There are 5 steps occurring simultaneously, operating simultaneously on the dead body. कोई भी डेड बॉडी हो उसके ऊपर जो है 5 प्रोसेस हो रहे होते हैं. पहला फ्रैगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. ये 5 प्रोसेस है ना साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते रहते हैं. देखेंगे वन बाय वन. ओके, फर्स्ट यू टेक डाउन दिस मच. सो अर्थवर्म तो हम सब लोग जानते हैं. अर्थवर्म इट इज आल्सो कॉल्ड फेरेटिमा. अर्थवर्म को साइंटिफिक नेम क्या है? फेरेटिमा. फेरेटिमा बोलते हैं अर्थवर्म. इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर पढ़े हैं ना फेरेटिमा? अर्थवर्म फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़े हैं. मोस्ट कॉमन अर्थवर्म, इंडियन अर्थवर्म इज फेरेटिमा. साइंटिफिक नेम फेरेटिमा है. फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बोल रहे हैं बिकॉज दिस अर्थवर्म दे ब्रेक डाउन डेड मैटर. अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेड मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, डेड ऑर्गेनिक मैटर, dead organic matter converted into carbon dioxide plus water plus nutrients plus inorganic nutrients. Inorganic nutrients. This is all about decomposition. During decomposition, organic matter of the dead body is converted into inorganic matter.
ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक क्या होता है, और डेड बॉडी में जितना भी और कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट ऑल ऑक्सीडाइज्ड and carbon dioxide is released from the dead body, water is released and inorganic nutrients are released. लिख लीजिए, नेक्स्ट अभी डिकम्पोजिशन के स्टेप्स की तरफ आएंगे अब हम. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन? steps of decomposition. Step number 1. What is the step number 1? fragmentation बोलते हैं. First step of the decomposition is fragmentation. What is fragmentation? Detritivores. Detritivore किसको बोल रहे हैं? Like earthworm. Detritivore like earthworm feed upon dead body, feed upon detritus. Detritivores like earthworm feed upon detritus, break down detritus into smaller size particles. This is called fragmentation. What happens in fragmentation? Detritivores. किसको बोल रहे हैं detritivores? earthworm को बोला जा रहा है. detritivore किसको बोल रहे हैं हम? earthworm को बोल रहे हैं. feed upon detritus. Already you know detritus. dead matter को बोल रहे हैं. break down dead matter into small size particle. dead matter, dead body को small particle में break करना है. This process is called fragmentation. Okay? It increases surface area. जैसे ही डेड बॉडी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना. surface area of the detritus increases. This is fragmentation. And what is detritivore? The organism which feed upon dead remains. The organism which feed upon dead remains are called detritivores. लिखिए, the organisms which feeds upon detritus, जो detritus को खाते हैं, feed upon detritus are called detritivores. Like example जो है, earthworm तो most common detritivore है. earthworm दिखने में बहुत ही soft, without any skeleton तो नहीं है earthworm के body में, but it is breaking the dead detritus into smaller particles. Earthworm and termites, they carry out the first step of the decomposition, that is breakdown. break हो जाती है dead body, that is fragmentation. Okay, चलिए second step की ओर बढ़ेंगे. What is the second step of decomposition? Second step of the decomposition is leaching. Second step. Leaching. Just imagine, पहला काम हो चुका है फ्रैगमेंटेशन, ब्रेक डाउन हो चुकी है डेड बॉडी. जैसे मान लीजिए दिस इज व्हाट detritus. This detritus break down into smaller particles. So leaching means what happens here, the detritus break down. पहले क्या हुआ, detritus break हो गया छोटे छोटे pieces में. This is called fragmentation. ये fragmentation हो गया, right? Clear है ना? fragmentation, breakdown को बोल रहे हैं fragmentation.
आफ्टर फ्रैगमेंटेशन व्हाट हैपन नेक्स्ट? लीचिंग ऑकर. व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग का मतलब क्या है? लीचिंग का मतलब क्या है? बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर soluble inorganic nutrients go down into soil and get precipitated as unavailable salts. The smaller particles of the dead remain, that is detritus. From these detritus, inorganic nutrients are extracted. Water soluble inorganic nutrients are extracted and they go down in earth and become as unavailable precipitated salts. और एक बार समझा रहा हूं, देखिए डेड बॉडी, अब डेड बॉडी में क्या है? मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, okay, so many minerals are there and those minerals are extracted from the dead body. Magnesium, potassium, they are extracted from the dead body and those are extracted in the form of salts. जैसे मैं बता रहा हूं मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में. दे आर एक्सट्रैक्टेड एंड दे गो डाउन into the soil. They go down into the soil and becomes as unavailable precipitated salts. This is called leaching. इसको बोलेंगे हम leaching. चलिए leaching का definition लिखेंगे. What is happening in leaching समझ गए ना आप? डेड बॉडी से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलेंगे और सॉइल में चले जाएंगे डीपर इनटू द सॉइल एंड बिकम एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स. अब आप बोलेंगे अनअवेलेबल सॉल्ट्स क्या है? अनअवेलेबल सॉल्ट्स मीन दे आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड गो डीपर इनटू द सॉइल. फिर सॉइल में जाने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड अगेन डिसोसिएट इन सॉइल इनटू मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयन, then they are available to the plants. Immediately salts are not available to the plant. Plants are not absorbing salt, plants are absorbing mineral ions. अगर मैं आपको पूछूं plants are absorbing magnesium chloride or plants are absorbing magnesium and chlorine separately, so what you answer? Plants are absorbing magnesium and chlorine separately, right? You are exactly correct. तो यहाँ पर minerals ions absorb हो रहे हैं, not salts. चलिए लिखेंगे what is mean by leaching. leaching क्या है? the process of extraction of inorganic nutrients. the process of extraction of inorganic nutrients from the detritus. The process of extraction of inorganic nutrients. क्या extract हो रहा है? Inorganic nutrients extract हो रहा है from the detritus into the deep soil horizon, into the deep soil as unavailable precipitated salts. Unavailable precipitated salts is called leaching. Definition दिखने में बहुत ज्यादा है. Suppose this is the piece of the detritus, ये dead body का कोई एक part है suppose, तो इसमें से inorganic nutrients जो हैं salts के form में extract हो रहे हैं. Magnesium chloride, potassium chloride, like that several inorganic salts are extracted, and those extracted salt they go deeper into the soil as unavailable precipitated salts. This is called leaching. ये हो गया है leaching. Next अब आएंगे third step की तरफ. What is the third step? Catabolism. Catabolism third step है. Catabolism. What happens in catabolism? Catabolism means here bacteria and fungi, bacterial and fungal enzymes, break down bacterial and fungal enzyme break down
detritus into breakdown detritus. What they break down? Detritus into inorganic substances. क्या में break कर रहे हैं? Inorganic substance में break कर रहे हैं. This process is called catabolism. Further, पहले fragmentation हो गया है, fragmentation के बाद inorganic salt extract हो गए, and further organic substances of the dead body. Suppose this is the total detritus and it is break down into smaller and smaller pieces. After that, inorganic nutrients are extracted. After that, what is left inside the dead matter? In the dead matter, what is left? Organic component. So that organic substance again converted into inorganic substance. The breakdown of organic substances into inorganic substances, it is called catabolism. पहले fragmentation हो गया, leaching हो गया है, अब catabolism. Organic substance break down into inorganic substances, catabolism over. After catabolism, what happen next? Fourth step. Total ऐसे 5 steps हैं. So every organic thing, body में जितना भी organic है, that organic is also converted into inorganic. For example, body में proteins हैं, carbohydrates हैं, all those are break down into inorganic substances. That is called catabolism. After catabolism, the fourth step, humification. What is mean by humification? Formation of nutrient rich soil, humus. What is humification? Formation of nutrient rich soil, humus is called humification. Humus क्या है? Humus मतलब soil है. Humus is a nutrient rich soil. Formation of nutrient rich soil, humus is called humification. What are the qualities of the humus? Humus is dark brown in color, colloidal in nature, colloidal होता है, humus dark brown in color, colloidal in nature. Amorphous होता है, एकदम fine powder. Amorphous means fine, एकदम soft powder, like fine powder. These are the qualities of humus. And it is highly resistant to microbial action. Humus is highly resistant. Humus is highly resistant to microbial action. Because almost everything is degraded. जब हर चीज ब्रेक हो चुकी है, then what is left? Is there anything to be broken? Right? जब हर चीज ब्रेक हो चुकी है, देखिए ह्यूमस क्या है बता रहे हैं यहां पर, हाईली रेजिस्टेंट है to microbial action because everything is simplified, broken, degraded. So that's why we are writing the point, humus is highly resistant to microbial action. So this is one more important line. And it is the reservoir of the nutrients. Humus is a reservoir. Humus is reservoir of nutrients. इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट जमा होते हैं ह्यूमस के अंदर. So these are the point to be remembered regarding humification. Okay, it is a reservoir. Almost all nutrients are present in the humus,
Most of the student they ask doubt in this point, third point. Humus is highly resistant to microbial action. What is meant by this बोल के पूछते हैं. Suppose if you break down a large compound, into very simplest atom, then it is not further degraded, right? उसके बाद और break down करना मुश्किल हो जाएगा. The same thing, humus means everything is broken, everything is degraded. So that's why we are writing humus is resistant to microbial action. Next, fifth step after humification, mineralization is there. Fifth step, mineralization. What happens in mineralization? Mineralization matlab the humus is further degraded by some microbe and release of inorganic nutrients. Humus is further degraded by some microbes and extract inorganic nutrients from the soil, from the humus soil, is called mineralization. So last previous point में हम लिखे थे humus is resistant to microbial action, और ये point में लिख रहे हैं humus is further degraded by some microbe. इसका मतलब ये है humus means 99.9% degraded, हर चीज ब्रेक हो चुकी है 99.9%, 0.1% is left. तो वो उसको भी जो है ब्रेक किया जाएगा बाय व्हाट प्रोसेस? मिनरलाइजेशन. समझ गए बात? 99.9% ब्रेक हो गई, ह्यूमस बन गया. 0.1% अभी वैसे ही है, उसको ब्रेक करने के लिए मिनरलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से डेफिनेटली हम ऐसा बोल सकते हैं ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, बट इट इज फर्दर ब्रोकन बाय सम स्पेसिफिक माइक्रोब to extract the inorganic nutrient from the humus soil. This is called mineralization. So like this, एक डेड बॉडी, ये डिट्रीटस था, पहले इसके ब्रेक पीसेस हो गए, फ्रैगमेंटेशन हो गया, फिर इसके बॉडी में से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट हो गए इनटू द डीपर सॉइल. देन from the detritus organic substance is converted into inorganic substance. फिर यहाँ पर सॉइल बन चुका था, ये ह्यूमस सॉइल, ह्यूमस था, यही है ह्यूमस. दैट मीन्स फाइनल द डेड बॉडी मिक्सेस इनटू द सॉइल, जस्ट लाइक शुगर dissolves in water, like that dead body disappear completely from the soil and everything mixes into the soil. So what is the main purpose of decomposition? Decomposition का main purpose क्या है? And what happens if decomposition fails to occur? Decomposition का बहुत importance है. Decomposition help in mineral recycling. Decomposition helps in mineral recycling. मिनरल रिसाइकलिंग. सपोज कोई ह्यूमन है, वो ह्यूमन के बॉडी में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बहुत सारे चीजें हैं, राइट? एंड दिस ह्यूमन डाइज. व्हेन ही डाइड, ऑल द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्टेड इनटू द सॉइल. सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाते हैं, फिर सॉइल से प्लांट में चले जाते हैं, फिर प्लांट में से किसी और ह्यूमन में चले जाते हैं, फिर ये ह्यूमन की डेथ हो जाती है, फिर एक्सट्रैक्शन हो जाता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक दिस. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन मिनरल रिसाइकलिंग. दैट मीन्स अगर आपके बॉडी में आप बोन्स में कैल्शियम है, आपके बोन्स बहुत ही हार्ड हैं बिकॉज ऑफ कैल्शियम, तो ये कैल्शियम किसी और का था, रिसाइकल होकर आया है आपके बॉडी में, इट विल रिमेन इन योर बॉडी.
till your lifespan, and after that again the calcium return back to the soil. So this is what the process, minerals recycling, very important. Decomposition help in mineral recycling बोलना चाहिए. Okay. Next, what are the factors affecting on the decomposition? Factors affecting decomposition require oxygen. देखिए decomposition को ऑक्सीजन चाहिए, require oxygen, कंपल्सरी ऑक्सीजन नहीं रहेगा. anaerobic condition, anaerobic condition मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट है. inhibit decomposition, inhibit decomposition. anaerobic condition अगर रहेंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, याद रखना है. Decomposition becomes slow, rate of decomposition slow, rate of decomposition slower if detritus is having, if detritus is having chitin, lignin. अगर डिट्रीटस में काइटिन और लिग्निन जैसे वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड हैं, ये they are water insoluble. You know, chitin is present in the exoskeleton of insects and also in fungus cell wall. Lignin भी plant tissues में होता है. This chitin and lignin, if it is present in dead body, the decomposition is slow. Decomposition fast कब होगा? Decomposition is fast. Decomposition is fast if detritus is having, if detritus is having nitrogen water soluble compound, nitrogen comma water soluble compounds. कौन से भी water soluble compound हो, decomposition fast. Warm and moist condition, warm and moist condition help in decomposition. Decomposition को cold temperature नहीं चाहिए, decomposition require warm condition, moist condition. सबसे fast decomposition कहाँ होगा? Fastest decomposition कहाँ पर है? Fastest decomposition seen in tropical rain forest, क्योंकि वहां पे वार्म कंडीशन भी है, मॉइस्ट कंडीशन भी. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फास्ट decomposition in tropical rain forest. So these are all the important points regarding decomposition. We have seen तो functional component of ecosystem के 4 हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, मिनरल साइक्लिंग. तो हमारा जो है प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया है, डिकम्पोजिशन खत्म है. नेक्स्ट टॉपिक हम एनर्जी फ्लो लेने वाले हैं. तो आज के क्लास के जो है नोट्स आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. डिकम्पोजिशन, फ्रैगमेंटेशन क्या है, लीचिंग क्या है, ओके, एंड ऑल द 5 स्टेप्स ऑकर साइमल्टेनियसली. 5 स्टेप्स जितने भी लिखे हम ऑकर साइमल्टेनियसली. ये ऑकर साइमल्टेनियसली ऐसा कैसा हो सकता है? सपोज एक डेड बॉडी है तो हो सकता है उसके हेड में फ्रैगमेंटेशन चल रहा होगा, उसके हैंड्स में लीचिंग चल रहा होगा, लेग में कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा. लाइक दैट इन द सेम डिट्रिटस ऑल द 5 स्टेप्स ऑकरिंग साइमल्टेनियसली. तो ऐसे डिकम्पोजिशन पढ़ना है आपको. नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो. So productivity and decomposition, revise it completely. We'll meet in next class with energy flow topic. Okay, we'll stop here. Thank you.